A very good morning to all my dear students. Today we will move on with the third chapter in English grammar, that is kinds of sentences. Now before this, in the last two classes we studied about sentences and we studied about subject and predicate. So I hope you remember what is a sentence. Sentence is a group of words that makes some sense, or group of words which conveys some meaning. That is called a sentence. Then we studied about subject and predicate. What is subject and predicate? Subject and predicate are the two parts of a sentence. That is, a sentence is made up of two parts called subject and predicate. हर sentence में एक subject होता है और एक predicate होता है. What is a subject? Subject is that part of the sentence which tells us what the sentence is all about. ठीक है, सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है. एंड व्हाट इज अ प्रेडिकेट? प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है, वो सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेडिकेट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ we will study about the kinds of sentences, or you can say different types of sentences. Sentences के अलग अलग type या अलग अलग प्रकार हम पढ़ेंगे. Okay, so here we can see that there are four types of sentences basically. What are the four types of sentences? Statements, interrogative sentences, imperative sentences, and exclamatory sentences. Okay, so the different four types or four kinds of sentences are statements, interrogative sentences, imperative sentences, and exclamatory sentences. Okay, listen to the pronunciations, students, as and when I am speaking. Okay, now let us study about all these four types of sentences one by one. The first one is statements. Okay, now what are statements? Statements are the type of sentences which says or states something, or you can say that statement is a type of sentence which tells us something about someone or something, which tells something about someone or something. Okay, or you can say that statement is a kind of sentence which gives us any kind of information. कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपको किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में, ठीक है, या किसी भी विषय का कोई इन्फॉर्मेशन देता हो, किसी के भी बारे में आप कुछ भी बता रहे हो, स्टेट कर रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट्स. इज दैट क्लियर? वी कैन सी द एग्जाम्पल्स हियर. आई लाइक वाटरमेलन्स. आई लव टू पेंट पिक्चर्स. जयंत इज़ वेरी हैप्पी टुडे. वी वेंट टू स्कूल टुडे. My friends gave me a birthday gift. So any kind of any kind of sentence which tells about something, that will be called as a statement. Is that clear, children? Now, a statement always begins with a capital letter and ends with a full stop. Statement हमेशा capital letter से शुरू होता है और full stop से end होता है. ओके, सो बेसिकली जो भी जनरल सेंटेंसेस होती हैं जिसमें आप कोई बात बता रहे हो, कुछ चीज़ों को स्टेट कर रहे हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट. सिंपल. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है क्वेश्चन सेंटेंसेस. सेंटेंसेस इन विच यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, those sentences are called interrogative sentences, जिसमें आप सवाल पूछ रहे हो. ओके, examples you can see here. What is your name? Did you meet Mr. Verma? Why were you absent yesterday? So in all these sentences you can see that there is a question being asked. यहाँ पर एक question पूछा जा रहा है. Okay, few more examples we can take, like where are you going? When are you coming back from school? When do you come back from school? What are you eating? ठीक है, एंड इस तरीके के कोई भी जो आप सेंटेंसेस पूछते हैं जो कि क्वेश्चन फॉर्म में होता है,
they are called as interrogative sentences. ठीक है, it asks something, कुछ पूछा जाता है, so that is called a interrogative sentence. Okay, now because it is a question, an interrogative sentence always starts with a capital letter and ends with a question mark. Okay, you are asking a question, so that is why it will start with a capital letter and it will end with a question mark. Okay students, now the third type of sentence is imperative sentences. Now what is imperative sentences? An imperative sentence requests, commands or gives directions. All those sentences in which any kind of request is made, any kind of command is given, any kind of instructions or directions are given, such type of sentences are called imperative sentences. जिसमें कोई रिक्वेस्ट होता है, आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, आप किसी को कोई सजेशन देते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, आप किसी को किसी बारे में कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. Okay, all those kinds of sentences will be called as imperative sentences. Request, आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं. Suppose for example, please give me your pen. आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पेन मुझे दे दो. Okay, so that request, that will be an imperative statement. You are commanding someone, open the door. आप कमांड दे रहे हो, open the door. Go out of the class. These are the different commands given. So when you are commanding someone, that will be an imperative sentence. You are giving directions, या आप कह सकते हैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई डायरेक्शन दे रहे हैं. Okay, like turn left when you move 300 after reaching 300 kilometers. After reaching 300 kilometers, okay, turn left, any direction you are providing. Okay, you have heard the example, like in car we use the Google Maps, and that Google Maps we get the instructions, we get the directions, so that is imperative sentences. Okay, any instruction you are providing to anyone. Okay, any kind of instruction. Okay, teachers आपको instructions देती है, so all those type of sentences will be called as imperative sentences. Okay, so imperative sentences में any suggestion can be given, advice can be given, any kind of instruction can be given, any kind of request can be made, order दिया जाता है, command दिया जाता है. All such sentences will be called imperative sentences. Okay students, now here we can take some example, see some example. Okay, yeah, here examples are given here only, like switch off the fan. You are being given a command. आपको एक ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है कि फ़ैन बंद करो, स्विच ऑफ द फ़ैन. प्लीज़ कम टू मी. हियर देयर इज़ अ रिक्वेस्ट बीइंग मेड. आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज़ कम टू मी. टेक द मेडिसिन्स रेगुलरली. आपको एक एडवाइस दिया जा रहा है या सजेशन दिया जा रहा है या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, टेक द मेडिसिन रेगुलरली. मेडिसिन आपको रेगुलरली लेना है. ओके, सो दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज विल बी कॉल्ड एज imperative sentences. Okay students, now the last type of sentence we will move on. These are called as exclamatory sentences. Now what are exclamatory sentences? Exclamatory sentences are the sentences which expresses some kind of emotion और some kind of feeling. किसी भी तरीके की आपके अंदर की emotions को, आपके feelings को जो express करते हैं, उसे हम exclamatory sentences कहते हैं. Okay, one more thing we did not study, that imperative sentences also begins with a capital letter and ends with a full stop. Imperative sentence भी capital letter से शुरू होता है और full stop से end होता है. Okay, yes, so we were studying about exclamatory sentence. So exclamatory sentences expresses any kind of emotion. आपके अंदर की भावनाओं को जब वो express होता है, तो वो सेंटेंसेस आपके अंदर के इमोशंस, आपकी भावनाएं जब एक्सप्रेस होती है, ओके, व्हेन द इमोशंस, व्हेन द फीलिंग्स कम आउट ऑफ यू in the form of a sentence, that sentence will be called as exclamatory sentence. Okay, example you can see here, what a beautiful picture it is. क्या शानदार पिक्चर है ना, आपके अंदर से वो इमोशन बाहर आ रहा है.
Okay, and exclamatory sentences always begin with a capital letter and it ends with an exclamation mark. This mark, you can see this mark here, this mark is called as the exclamation mark. ओके सो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अंदर से एक अच्छा एक इमोशन फील हो रहा है कि बहुत सुंदर सा पिक्चर है, आपने बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर देखा तो आपके अंदर से वो वाव वाली जो फीलिंग है वो निकल के आ रही है. व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, है ना. सो आपके अंदर की वो इमोशन जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस हो रही है. Okay, so that kind of these type of sentences are called exclamatory sentences. How fast she is running, कितना तेज भाग रही है, how fast she is running. So here also a strong feeling or an emotion has been expressed. So this is also an exclamatory sentence. Now exclamatory sentences positive भी हो सकते हैं, negative भी हो सकते हैं. Suppose कोई कुछ भी गलत काम कर रहा है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ वॉट ऑन अर्थ यू आर डूइंग, और आई कैन से व्हाट द हेल आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, है ना, क्या व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग. ठीक है, सो वो मेरे अंदर से वो इमोशन निकल के आ रहा है. सो दैट विल ऑल्सो बी एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर कुछ इमोशंस आपके एक्सप्रेस होते हैं, जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज़. तो वो जो वाव है वो आपकी इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है. तो such kind of sentences are called exclamatory sentences. And remember that it begins with a capital letter and ends with an exclamation mark. Is that clear, students? So these were the different types of sentences. So what are the different types of sentences that we studied? First one is statements. Second one is interrogative sentences. Third is imperative sentences, and the fourth one is exclamatory sentences. Okay, now exercises you have to do better. First one is A. Exercise A. Identify the different types of sentences as interrogative, imperative, exclamatory or statements. Now you have to identify what kind of sentences these are and you have to write it in the space provided. Okay, first one is please open the door. तो यहाँ पर एक request किया जा रहा है, please open the door. So what kind of a sentence it is? Imperative sentences. Okay, few I will do for you, others you have to do on your own. Okay, so this is imperative sentence. हमने पढ़ा था ना, imperative sentences में advise किया जाता है, request किया जाता है. Okay, imperative sentences. Imperative sentence. Okay, now second one, are school books available in your store? Now यहाँ पर there is a question being asked, so what kind of a sentence it is? Interrogative sentences. Please see the spellings properly and then write interrogative sentence. Okay, students, now similarly read these sentences very carefully and then write in the blank space provided what kind of sentences they are. We studied about the different types, so you can easily do it over here. Okay, now and the second exercise, students, these are B exercise. Exercise B, beta, you have to do in your grammar copy. Okay, this you have to do in your grammar copy. Okay, A exercise you have to do in the book only. This exercise you have to do in your grammar copy. Now what you have to do, make sentences as instructed in brackets using the words given below. Now you have to use the words given here. आपको यहाँ पे जो words दिए हैं वो use करना है और sentence बनाना है. और कैसा sentence बनाना है वो आपको bracket में दिया है. Like teacher से आपको एक question sentence बनाना है. Okay? For example, teacher से आप question sentence कैसे बनाओगे? कोई भी क्वेश्चन. ओके, विच टीचर टीचर्स यू इंग्लिश. क्वेश्चन बन गया. ठीक है, टीचर से आपने क्वेश्चन सेंटेंस बनाया, विच टीचर टीचर्स यू इंग्लिश. टीचर वर्ड भी आ गया और सेंटेंस आपका कैसा बना, क्वेश्चन. ओके, इसी तरीके से आपको जो इंस्ट्रक्शंस जो ब्रैकेट में दिए हैं वर्ड्स को यूज़ करके ब्रैकेट में जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए उस टाइप का सेंटेंस आपको बनाना है.
Okay, I gave you an example. Similarly, second, classroom. You have to use the word classroom and you have to frame a sentence which is imperative. इम्परेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि कोई रिक्वेस्ट करने वाला, कोई एडवाइस देने वाला सेंटेंस, कोई सजेशन देने वाला सेंटेंस बनाना है. आपको वर्ड उसके अंदर उस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आना चाहिए? क्लासरूम आना चाहिए. ओके. देन फ्रेंड से आपको सेंटेंस बनाना है, वो एक स्टेटमेंट होना चाहिए. ओके. You have to make a sentence with painting and that has to be an exclamatory sentence. Okay students, so this you will do in your grammar copy. Okay, this is your homework and this will be your classwork.